So we are studying electrohomeopathy. Okay. The first chapter is medical science, history, and legal status of electrohomeopathy. So already we studied, but again we are repeating the class. Okay. So basically जो भी मेडिकल साइंस रहता वो दो चीजों से मिलके बनता. ठीक है. मेडिकल साइंस. Okay. Medical science have two words. One is medicine and another one is science. Okay. साइंस. सो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे अपन? मेडिकल साइंस. ठीक है. तो मेडिकल का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडिसिन? मेडिसिन हैविंग डायग्नोसिस, ओके, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन. सो मेडिसिन इज नथिंग बट क्लिनिकल प्रैक्टिस. ओके. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मेडिसिन? टू improve human health through patient care. Okay, so it is the main motive and goal of every medical science. So what is medicine? Medicine having three combination: diagnosis, treatment, and prevention. What is diagnosis? Diagnosis is nothing but identification of diseases. बीमारी को मालूम करना. Okay. And disorders, कुछ ऐसे खराबियां आती हैं, उन खराबियों को मालूम करना. और हेल्थ कंडीशंस. ठीक है. तो इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन को अगर मालूम करना है तो हमको डायग्नोसिस परफेक्ट आना जरूरी है. ओके. सो बेसिकली in electrohomeopathy we have three types of diagnosis: pulse diagnosis, tongue diagnosis, and iris diagnosis. Pulse diagnosis, tongue diagnosis, and iris diagnosis. So how do you diagnosis done? It is based on symptoms, sign, examination, and investigation. So there is basically three types of diagnosis. One is pulse diagnosis. Another one is we have pulse, okay, tongue, and iris. Okay, we will discuss in this diagnosis classes, diagnosis subject. Okay. So in modern physics, modern science, how many types of diagnosis are there? We have pathological diagnosis, and radiological diagnosis. And clinical diagnosis. So nowadays we have to combine all this. Okay. Also we have to advise the laboratory test also to see the internal condition of the organ. Radiological diagnosis, it will give the structure of the internal organs. Okay. Clinical diagnosis, what are the signs, symptoms you can observe, and you have to see the patient, then you will able to diagnose the patient. So these are the different types of diagnosis what we will do while treating the patient. Treatment means whatever diagnosis you done, now you have to three steps: cure the disease. Okay. First thing what you will do, you will maybe cure the disease. कर सकते, बीमारी को दूर कर सकते. Cure the disease, दवाई दे क्या. ओके. सो थोड़ा ये माउस से लिख रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा. Cure the disease. Okay. Second option we have, what option we have? Second option we have to stop the disease for further development. To stop the disease for further development. कि बीमारी आगे बढ़ने से आपको बचाना है, ये आपका मकसद है. सेकंड. पहला मकसद क्या था? बीमारी को दूर कर देना. लेकिन कुछ बीमारियां ऐसे रहती दूर नहीं होती, लेकिन दवाई देने का मकसद क्या रहता? कि और आगे नहीं बढ़ना बीमारी. थर्ड, ट्रीटमेंट का और एक मकसद क्या है आपका?
कि बीमारी ना तो क्यूर हो सकती, नेदर द डिसीज में बी क्योर्ड, नेदर वी कैन स्टॉप द डेवलपमेंट, बट वी कैन improve the quality of the life of the person. With the disease he can able to live the life, quality of the life. So improve the quality of the life. This is our main motto when the disease is not going to be cured. Okay. So same thing are written here. Medications, we will give medicines. Some allopathy doctors will do surgeries. Rehabilitation means care, supportive care. All this will done during treatment. In electrohomeopathy, we have remedies. We will treat with the help of remedies. And whenever you are treating the patient, you have to remember one thing. The counseling is very, very important. आप पेशेंट से बातचीत जो करते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. काउंसलिंग, आप समझा रहे हैं बीमारी क्या है. ओके. आप समझा रहे हैं बीमारी कब तक रह सकती, आप समझा रहे हैं कितना डेवलपमेंट हो सकता, कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता, आप ये समझा रहे हैं कि आपकी दवाई कितना काम कर सकती. तो ये सब चीजें जो है आपको काउंसलिंग के जरिए से करना है. यू हैव टू डू काउंसलिंग to the patient in a better way, better understanding way. Okay, then only you will able to understand, then only the patient will able to understand. So this is the basic thing. Next is prevention. So prevention means before entering the disease, what you can do with your pathy. Okay, with your pathy, like in electrohomeopathy we have, thanks, in electrohomeopathy we have remedies to cure or to protect from the diseases. We will give lymph purify remedies and blood purify remedies. Okay, so these remedies are nothing but for prevention only. Okay, as well as I gave the example of modern medicine also. Before entry of the winter or cold season, they will advise to take vitamin C tablets to improve the immunity. So there are three types of prevention: primary, secondary, and tertiary. Primary means prevent disease before it occurs. यानी बीमारी आने से पहले आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे. जैसा कि मच्छरों का मौसम अब आने वाला है, यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ by taking prevention precautions, okay, to protect yourself from the mosquitoes. Okay, this is known as primary prevention. Secondary prevention, early detection and intervention. So initially you got any type of thing, now you are doing secondary prevention. Already disease entered into your body, कुछ हो गया आपको, मतलब कुछ प्रॉब्लम आया, फर्दर डेवलपमेंट होने से आप बचा रहे. जैसे कि एग्जांपल के तो कोल्ड हो गया, आप फीवर आ गया, तो आप बाहर के एनवायरनमेंट से बच के रहना है. यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट. Okay, then only your progression of the fever will not sometimes happen, but most of the time if you protect yourself from the outer environment, you take complete rest, okay, they will protect you. It is secondary prevention. Tertiary prevention means now you are taking remedies along with the treatment, now you are taking prevention. Okay, because you have to protect yourself further development of the disease. ओके, सो ऐसा आपको प्रिवेंशन लेना है ट्रीटमेंट के साथ साथ, तो तभी आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो पाएगा. जैसे आप पेशेंट क्या बोलते हैं, ये खा सकते ना, वो खा सकते ना, बल्कि पहले एज पूछते. बीमारी रहती लेकिन सवाल क्या रहता, ये बीमारी के ऊपर हम लोग खाना ही खा सकते. तो आपका जवाब क्या रहना, आपको अगर बीमारी बढ़ाना नहीं है फर्दर, और बीमारी बढ़ा के नुकसान पहुंचाना नहीं है, तो आपको नहीं खाना है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वन एग्जाम्पल आई विल गिव यू.
that one patient come to your clinic with complaint of burning sensation in the stomach. पेशेंट आया आपके पास, पेट में जलन है बोल के आया, ठीक है, तो आपने दवाई दी, you gave the treatment, medicine, everything is okay. He asked what are the precautions and how to prevent developing the further burning sensation. So what is the answer? You have to avoid hot, chilly, spicy food because your mucous membrane internally start damaging due to the taking lot of species. ओके, चिल जो भी है, आप तेज स्पाइसी खाते फूड, इसकी वजह से क्या हो गया, पेट में बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो गया. ये 0 ग्रेड में है, अभी 0 to 1 में जा रहा. इफ यू doesn't take precaution or you doesn't take prevention, what will happen, it will increase. So he will ask, you are giving the treatment na sir, so then how will it will increase the problem, ये प्रॉब्लम कैसा बढ़ेगा, पेशेंट पूछेगा आपसे, तो क्या जवाब रहेगा आपका? Because every treatment need precaution and as well as prevention. ओके, आप आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे तो आप प्रिवेंट करने के लिए मेजर्स लेना जरूरी है. ओके, बिकॉज इट इज ऑल्सो ए मेडिसिन. समझ में आ रहा? ये भी क्या है, मेडिसिन है, इस वजह से आपको प्रिवेंशन लेना है. विदाउट प्रिवेंशन यू कैन नॉट ट्रीट द पेशेंट, विदाउट डायग्नोसिस यू कैन नॉट ट्रीट द पेशेंट. ओके, so these are the basic things you have to remember. Now scientific, science, what is science? So basically I still here I explained about what is medicine or medical. Now we will observe about scientific method of medical research. Okay, so basically first everyone will observe anything. Okay, you observe something, okay, you will notice something. आप कोई चीज देखते ऑब्जर्व करते, कुछ लोग ऑब्जर्व करके छोड़ देते बस, ठीक है. जैसा कि एक बिल्डिंग है, समझिए ये बिल्डिंग इतनी बड़ी कैसा बनाई गई, 100 floors, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन. ओके, likewise you can observe that how these medicines are prepared. ये कैसा एक थॉट आया, ऑब्जर्वेशन आया आपको. नेक्स्ट आप क्या करेंगे उसको, अगर और आगे बढ़ना है तो आपको हाइपोथेसिस में आना है, यानी यू हैव टू अ सर्टेन एक्सप्लेनेशन विद इन योर सेल्फ. आप कुछ उसका इमेजिन करना पड़ेगा, आपको प्रिडिक्शन करना पड़ेगा, ठीक है. यानी आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि आप वो क्यों ऐसा बना, ठीक है. फिर कुछ लोग क्या करेंगे, हाइपोथेसिस में ही छोड़ देंगे. यानी हम लोग कुछ इरादा करते हैं, पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अरे ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं बोल के, ठीक है. जैसा कि ये BEMS का कोर्स ही ले लीजिए या मेडिकल कोर्स ले लीजिए, कुछ लोग करते हुए आप दे दिए, तो आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया, हाँ ये लोग कर रहे हैं. फिर आपके जहन में आया ये लोग कहाँ पे है, कितने साल का कोर्स है, आपने इमेजिन किया. फिर थर्ड नंबर पे आप क्या करेंगे, उसको प्रैक्टिकल वे में लाएंगे, रिसर्च करेंगे या थीसिस में लाएंगे, उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे उस पर. यानी आप वो कॉलेज को जाएंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है. इफ यू गेट everything in its place, what will happen, you will take admission. आप क्या करेंगे, एडमिशन ले लेंगे. आपको समझ में आई बात, आपको करना है कोर्स आगे चल के, तो आप एडमिशन लेंगे. तो ऐसे ही कोई भी चीज का जब साइंस बनने से पहले पहले अब्जॉर्प्शन होता, उसके बाद हाइपोथेसिस, थीसिस, एंड देन if it get positively, then it will become evidence. If it is positive, then it will become science. Okay, so these are the 4 to 5 steps, then it will become science, then it will become science. So medical science, medical have treatment, diagnosis and prevention. In science we have observation, hypothesis, thesis, proof and positive science. This is known as medical science. So if you get the question in your
एग्जाम यू हैव टू राइट दैट। ओके, अब आइए दूसरे मेडिकल साइंस क्या क्या है। देखिए इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, यू हैव एलोपैथी which use pharmaceutical drugs, surgeries to treat the pathogens and symptoms. Ayurveda, they will balance three doshas, vata, pitta, kapha, using herbal remedies. In it is rooted in Vedic history. So वेदा में ये सब चीजें लिखे हुए थे, तो वो लोग उसको फॉलो करते हैं, जैसे ब्रह्मा, धनवंतरी। ओके, यूनानी इज बेस्ड ऑन फोर ह्यूमर्स, मिजाज पे काम करता है, लाइक ब्लड, फ्लेम, येलो एंड ब्लैक बाइल। ओके, इसको रिडिफाइन किया किसने? इब्ने सीना ने। ओके, एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय 13th century अंडर मुगल्स। इट वाज मॉडर्नाइज मतलब आज जो कंडीशन में है इसको लाने वाले हकीम अजमल खान इन 20th century। ओके, so this is about Unani. Homeopathy, it is founded by Samuel Hahnemann in 1796. It operates the principle of like cures like. Okay, using highly diluted substance. Okay, and it enters into the India by the help of Maharaja Ranjit Singh in 1839. Naturopathy and yogic science. Naturopathy means natural therapies. Yoga means physical, mental, and spiritual practices. They are the specific type of positions. When you will do that, that is called yoga. Naturopathy, they will use, you will take plant, and they will take some uh, natural substances. With that, they will treat the patient. Okay, now you have Siddha. Okay, it is a Tamil system of medicine. Okay, it will balance the three vital humors, vatam, pittam and kabam, through medicines, diet, lifestyle and holistic process. तो मैंने बताया था कि आप कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे, खाने से पहले पानी नहीं पीना, खाने के बाद पानी नहीं पीना, खाने के बाद फौरन सोना नहीं, खाने से रात के खाने के बाद फौरन सोना नहीं, टहलना, दोपहर के खाने के बाद चलना है। तो these are the holistic practices by which you will improve health. Okay, now come to part of electrohomeopathy. It is founded by Dr. Count Caesar Matti in 1865. Okay, it is focused on purifying blood and lymph. ब्लड एंड लिम्फ, तो ये इनका फोकस कहाँ पे है? ब्लड एंड लिम्फ पे है। लेकिन इससे पहले जरूरी है कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन चैनल्स को अच्छे से रखे। व्हाट आर द डिटॉक्सिफिकेशन चैनल्स? पर्पस, प्रॉपर डिकम्पोजिशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। यानी ये डिकम्पोजिशन ब्लड में, लिम्फ में रहने के लिए जरूरी है कि ये चार चैनल्स क्लीन रहे। व्हाट आर द चार चैनल्स? व्हाट आर द फोर चैनल्स? इंटेस्टाइनल चैनल, रीनल चैनल, respiratory channel and cutaneous channel. You can eliminate the solid waste and toxins from intestine through the form of stool. Okay, support healthy blood and lymph circulation. Renal channels में you have to filter blood, which removes macroparticles, dissolve waste through urine, maintain fluid and electrolyte balance. Lungs, it will exchange or expels gaseous waste like carbon dioxide. It will also keep blood purification. Cutaneous skin, it eliminates microparticles, microtoxins through perspiration. Okay, and it will also maintain regular temperature and support lymphatic and circulatory health. Okay, तो ये फोर चैनल्स डिटॉक्सिफाई एंड रिटॉक्सिफाई में अगर चलते रहेंगे तो बॉडी के अंदर कोई खराबी नहीं आएगी। खराबी नहीं आएंगी तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड एंड लिम्फ मेंटेन रहेंगे। ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग। हेल्दी ब्लड, हेल्दी लिम्फ के लिए जरूरी है डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिटॉक्सिफिकेशन। अंडरस्टूड? सो decomposition and recomposition are the main filter channels which will lead to keep the blood and lymph healthy. Okay, you can see the evaluation of medical science system in India. The medicine is path of diagnosis. Okay,
diagnosis, treatment, and prevention. The scientific method path, hypothesis, thesis, proof, and positive science, Ayurveda, allopathy, Unani, homeopathy. Mughals have started Unani, okay, and electrohomeopathy by Dr. Considermati, okay, we'll discuss here, okay. So basically, when the allopathy entered in our India in 16 to 17th century during Mughal era, Mughal period, okay, when her queen is suffered from any type of burning, skin burning. So he, the one uh, Western person treated with the precursor of iodine, okay, where the traditional methods are failed. Okay, 1916 इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट के हिसाब से वेस्टर्न मेडिसिन इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल सिस्टम एट द टाइम 1916 में ये रिकॉग्नाइज हुआ इंडिया में इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट के तहत 1970 द इंडियन मेडिसिन सेंटर काउंसिल एक्ट प्रोवाइडेड फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन फॉर आयुर्वेदा आयुर्वेदा कब रिकॉग्नाइज हुआ 1970 में 1973 में होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट इन 1995 ISMNH इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी 1995 में 2014 में आयुष का एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष स्टार्टेड वेयर एवरीथिंग इज इंक्लूडेड आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड homeopathy. This is named as Ayush. Okay, so you can see. So electrohomeopathy you can practice under Article 19. Okay, you can select your profession. Okay, and as well as some government orders also there. Okay, recently Rajasthan government recognized the practice of electro homeopathy. So ये था आपका medical science and general information of other pathies. Now another topic we'll cover, that is difference between homeopathy and electro homeopathy. You can see who discovered homeopathy. Homeopathy is discovered by Dr. Samuel Hahnemann. डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने इसको डिस्कवर किया कब 1796 में और इंडिया में किसने लाया इंडिया में कब आया 1835 में इट केम इन इंडिया इन 1835 electrohomeopathy was discovered by Dr. Count Caesar-Matti in 1865 and entered in India 1885. What is the preparation, composition of medicine? Homeopathy will will prepare medicine from plants, animals and minerals. So वो लोग plants को भी utilize करते, animals को भी utilize करते और minerals को भी use करते and chemicals को भी वो use करते for making of medicine. But in electrohomeopathy, we have only one purpose, that is we have to use non-poisonous plants, okay, which will easily cure our body. Okay, so homeopathy के medicine को क्या बोलेंगे? Mother tincture. What is the name given to the homeopathic medicine? Mother tincture. And what is the storage form of this medicine? Through alcohol और RS. RS बेस में बनाएंगे वो लोग मदर टिंचर को सेव करने के लिए, ओके, सेफ रखने के लिए. एंड इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, व्हाट इज द टर्म वी यूज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन? स्पाइजेरिक एसेंस. थ्रू कोहोबेशन प्रोसेस, जो प्रोसेस से मेडिसिन बनाया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? कोहोबेशन. व्हाट इज द प्रोसेस नेम? कोहोबेशन प्रोसेस. द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिल वाटर. डिस्टिल वाटर में आप क्या करेंगे? उसको स्टोर करेंगे. यानी स्पाइजेरिक एसेंस जो भी बनेगा वो डिस्टिल वाटर में बनेगा. What is the treatment philosophy? Treatment philosophy of homeopathy is similia similibus curanter.
And the treatment philosophy of electrohomeopathy is complexa complexis curenter. Or means similia similibus curenter means like cures like. Means whatever the disease is there, you have to treat the disease with that same remedy. Okay. इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, जैसा कि फीवर है, खांसी है, सर्दी है, तो एक प्लांट जिसको हेल्दी इंसान को दिया गया था, उसकी वजह से जो सिम्टम्स आए थे, सेम सिम्टम बेस्ड प्लांट we will also give to the same person. Okay, so this is as similia similibus curanter. In electrohomeopathy, we have to cure the lymph and blood, and as well as Dr. Townsend might observe that our body is complex. सिंगल नहीं है हमारी बॉडी कि एक रेमेडी दे दो ठीक हो जाएगी. हमारी बॉडी क्या है? कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गन्स है, सेल्स है, टिश्यूज है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स आर देयर, डिफरेंट प्रॉब्लम्स में भी अकर्स. सो हिज vision is that complexa complexis curenter means complex body needs complex remedies to cure the complex issues or complex diseases. Okay, so and homeopathy when initially they invented, इट इज सिंगल ड्रग थेरेपी. जब वो इन्वेंट हुआ था, वो क्या था? सिंगल ड्रग थेरेपी था. ये पहले बहुत सारे प्लांट्स थे, मिला के दे रहे थे वो लोग. नहीं, ऐसा नहीं था. एक ही दवाई, बहुत से बहुत दो दवाई देंगे आपको, दो प्लांट्स देंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन योर सिम्टम्स. बट इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दिस इज मिक्स्ड mixed medicinal plants are there. We have one remedy. In one remedy we have different types of plants are there. Okay, next, safety and side effect. In electrohomeopathy there is no side effect, but their temporary rise of excitement of symptoms are there for least period. What will happen to the patient? Patient will have some palpitation, patient will have urination, sometimes rise temperature, or else he will feel bloating in the stomach, or else he will get the urination. This is the simple things he will get during 5 to 10 minutes. But in homeopathy, you have drug aggravation. If you take wrong remedy, it will cause serious effects sometimes. Okay, in electrohomeopathy and homeopathy, what is the principal force which is present in the universe? They will tell that every particle in the human in this uh, uh, earth or in this uh, area, that is vital force. So everything have vital force. So what we are extracting the vital force, and that vital force will enter into human body and it will cure the body. But what we will tell in electrohomeopathy that we have OD force. Odic force means every plant have OD force along with his liquid, solid, material. Okay, the OD force is responsible to get all the properties from the plant. So with the help of cohabitation process, we are eliminating or taking the odic force. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? OD force ले रहे हैं ताकि बॉडी के अंदर जाके वो क्या कर सके? ब्लड एंड लिम्फ को प्यूरिफाई कर सके. Okay, this is the basic difference. This basic bit difference between them and us. Next is medicinal strength. So they are prepared from the alcohol base. We are preparing in water base. Most of the electrohomeopathy companies prepare water base, but some companies will make the remedies in spirit base also or alcohol base. But our Dr. Consizer Mati prepared the remedies in water base only. Next, the important thing regarding this, in homeopathy it is difficult to diagnose the disease because there are different large number of medicines. There are more than 3000 medicines are there in homeopathy, but in electrohomeopathy you have least number. We have only 114 plants, 38 remedies or 60 remedies.
You can select easily by based on symptoms, sign, diagnosis, okay, by pulse diagnosis, tongue diagnosis, and iris diagnosis. And modern diagnosis also help you to diagnose the problem. So you can easily select the remedy. Okay, so these are the basics difference between the homeopathy and electro-homeopathy. Is there anything missed? We'll see in this. Okay, we discussed about founder, origin, medical composition, extract and solvents, treatment philosophy, core principles, safety and aggravation, core philosophy, force, diagnosis. Okay, so these are the basic and important difference between homeopathy and electro-homeopathy. So these are the two chapters we studied in previous class. Again, I did the revision in for your understanding. So any doubts, kindly you can ask.